Hello everyone, a warm welcome to all of you in today's session of EduTap. And guys, today we will be covering the top 50 MCQs from the month of May 2023, and this is the part 4 of this series. So guys, if I'm audible and visible to you, all of you are requested to give a thumbs up in the chat box so that we can begin this particular session. So guys, first of all, we apologize for the slight delay in this particular session. So I can see some of the people are responding about the same, that yes, I am audible and visible to all of you. So guys, we are beginning this particular session. So guys, once again, a warm welcome to all of you in the today's session on EduTap, in which we will be covering the top 50 MCQs from the month of May 2023, part 4. So guys, I believe that your preparations for the upcoming exam are really going great, and you all have really revised everything that we have covered in the past 1 week from the fast track sessions. But how will you analyze that whether you retain all the important information or not? So in order to test this particular part to analyze whether you retain everything or not, so we are here with another important session of the top 50 MCQs, in which we will be revising everything through the multiple choice questions that you will be getting in the exam. Okay, so guys, these general awareness MCQs will be relevant for all the RBI Grade B, NABARD Grade A, as well as the SEBI Grade A exam. So guys, before starting the session, there is a small announcement for all of you that we at EduTap are providing you the comprehensive guidebooks to the aspirants of RBI Grade B, NABARD Grade A, as well as the SEBI Grade A exam. So when I talk about the guidebooks, so these guidebooks provides you the definitive answers to the queries that you have in your mind regarding the exam. So it can be about the body in which you are targeting to enter into. It can be regarding the exam. It can be regarding the preparation. For example, when I take the example of Reserve Bank of India, so what exactly is the developmental role that the Reserve Bank of India plays in the Indian economy? So when I talk about the exam, तो exam का detailed syllabus क्या है, different stages क्या है, टॉपिक्स क्या हैं जो आपको कवर करने हैं. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट प्रिपरेशन, तो क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, कैसे पढ़ना है. सो एवरीथिंग, every answer to all these every questions are being provided to you in these guidebooks. So what are you waiting for? Kindly download these guidebooks from the link given in the description of this particular session. So guys, now let's get back to the session. So here you have to tell me at the end of the session that what exactly your score is out of the 50. Okay, तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक चीज इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, दैट इज पार्टिसिपेशन. तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर एंड द थिंग दैट यू सी द ऑप्शन विच इज राइट एज पर यू. ठीक है, तो 5 ऑप्शन में से जो भी राइट है आपको चैट बॉक्स के अंदर बताना है. सो आर यू गाइज रेडी फॉर द टुडेज सेशन? क्या आप सभी रेडी हैं आज के सेशन के लिए? Okay, so everybody is ready. So let's begin the session with the very first question here on the screen. And the very first question is on the artificial intelligence supercomputer which has been recently installed at CDAC. और आपको मुझे बताना है उस supercomputer का नाम जो कि recently install किया गया है CDAC facility में, जो कि महाराष्ट्र पुणे के अंदर है. And it has been ranked 75 in the world in the 61st edition of top 500 global supercomputing list. So guys, quickly tell me what is the right answer to the question number 1. Options are Airavat, Param, Sahasrat, Mahavat and Siddhi. So I can see here most of the people are opting option A as the right answer. That is Airavat. Absolutely right guys. Airavat की full form की बात की जाए, it stands for AI Research Analytics and Knowledge Dissemination Platform. So Airavat, basically it is of 200 AI petaflop mixed precision weak compute capacity, and it is currently funded by the MITI and implemented by CDAC Pune. Okay, so guys, this is a kind of thing that you are really required to remember from the exam point of view. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, and next question is from the schemes. The scheme here is basically उड़ान, which is in the news, जिसको लॉन्च किया था मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने. तो अब आपको बताना है कि ये उड़ान स्कीम का कौन सा वर्जन रिसेंटली लॉन्च किया गया है, अंडर विच कनेक्टिविटी विल बी प्रोवाइडेड टू द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री एंड दे आर गोइंग टू अचीव लास्ट माइल कनेक्टिविटी थ्रू द हेलीकॉप्टर्स. तो हेलीकॉप्टर्स के लिए बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है. ये फोकस करने वाला है हेलीकॉप्टर्स पे. अब आपको बताना है मुझे कि इस उड़ान स्कीम का ये कौन सा वर्जन है जिसको कि रिसेंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने. सो क्वेश्चन नंबर 2. सो गाइस, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज उड़ान 5.1 which has been recently released and this version has been specifically designed for the helicopter routes. So guys, जब हम उड़ान स्कीम की बात करते हैं तो उड़ान के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और आपको पता होना चाहिए उसकी डिफरेंट डायमेंशंस. फॉर एग्जांपल, जब हम बात करें कि ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी, इट वाज लॉन्च इन ईयर 2016
2013, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इसको लॉन्च क्यों किया गया था, ताकि हम इंडिया के अंदर सी उड़े देश का आम नागरिक, दैट मींस वी आर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एयर ट्रेवल टू द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, सो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज बीइंग लॉन्च्ड। अभी उड़ान 5.1 को लॉन्च किया गया है, इससे पहले उड़ान 5.0 लॉन्च की गई थी इन द अप्रैल 2023, जिसके अंदर फोकस एरियाज क्या थे, आपके वो वाले आपके जो एरोप्लेन्स हैं जिसके अंदर 20 to 80 सीट्स हैं या फिर मोर देन 80 सीट्स हैं। ठीक है, दैट इज बेसिकली कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 व्हीकल्स आर बीइंग कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो आई होप दैट दिस स्कीम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द फिपिक 3 समिट। सो फिपिक क्या है, फिपिक इज द फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन। सो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड समिट थी फिपिक की, उसको रिसेंटली यहां पर लॉन्च किया गया था। आपको बताना है कि बेसिकली पीएम ऑफ इंडिया एंड द पीएम ऑफ विच कंट्री हैज बेसिकली co-chaired this particular summit and they have jointly hosted this particular summit. So please quickly tell me what is the name of that country which was the part of it. So let me tell you that this particular summit was attended by 14 Asia Pacific Island countries और ये बेसिकली हुई थी इन पोर्ट मोर्सबी in Papua New Guinea, and that is why guys let me tell you that this particular summit was being co-hosted by PM of India and the PM of Papua New Guinea, and the right answer is option E, that is Papua New Guinea, which is absolutely right. All the people have given me the right answer. Now let's move on to the next question, and the next question is on one of the reports. Report का टाइटल है थ्राइविंग मेकिंग सिटीज ग्रीन रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। ठीक है, तो जब भी हम रिपोर्ट्स कवर करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द वेरी फर्स्ट डायमेंशन? सो वी ऑलवेज टेल यू दैट देयर आर 5 fingers in our hands and there are 5 dimensions of the reports. That is the releasing body, about the section of the report, then we have important findings, important rankings and the recommendations. तो यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन है, the question is basically you have to tell me the name of the organization which has released this report. So let me see that what exactly is the right answer to this question. So all the people are telling me option C, absolutely right, World Bank. तो कोई World Bank के नए प्रेसिडेंट का मुझे नाम बता सकता है? That what is the name of the president of World Bank? World Bank के न्यू प्रेसिडेंट कौन है अभी? That is अजय बांगा जी। ठीक है जी, तो वर्ल्ड बैंक को अजय बनाने के लिए यहां पर कौन से पर्सन को अपॉइंट किया गया है? दैट इज अजय बांगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि हेडक्वार्टर कहां पर है वर्ल्ड बैंक का, इट इज इन वॉशिंगटन डीसी, United States. So guys, these are the important things you have to remember from the exam point of view. Let's move on to the next question. So अगला question आप सभी की स्क्रीन पर है, and here you are required to tell me the loan amount of what exactly or higher that is basically for which the government has put a digital mechanism. See guys, government ने एक recently एक digital mechanism यहाँ पर लगाया है so that जो भी हमारे ऐसे बड़े बड़े लोन्स होते हैं उनको एनपीए होने से हम बचा सकें। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है एक रिपोर्ट डिजिटली यहाँ पर सेंड करेगा रिगार्डिंग दोज बोरोअर्स to all the public sector banks which are having a loan amount of dash amount, and that is the amount that you have to tell me in the comment section कि वो कौन सा अमाउंट है जो मिनिमम अमाउंट है जिसके ऊपर ये digital mechanism काम करेगा. So question number 5. So I can see some people are saying 10 crore, some are opting the 25 crore. So let me tell you, it is basically rupees 50 crore amount that has to be there in order to send this digital report to the PSU banks by the CEIB, that is Central Economic Intelligence Bureau. So आप देख सकते हो that Central has cleared a prompt digital reporting and communication mechanism so that they can plug the defaults on the loans of over rupees 50 crore. तो 50 करोड़ से ऊपर के लोन्स के लिए इसको implement किया गया है. Moving on to the next question guys. So here you have to basically tell me the name of the bank which has launched this particular program, that is Future Bankers 2.0. तो आप देख सकते हो कि ये मणिपाल ग्लोबल एकेडमी जो है BFSI की, तो उसका एक ये प्रोफेशनल डिप्लोमा है और आपको ये बताना है कि इससे वो कौन सा बैंक है जिसका टैलेंट यहाँ पर नर्चर किया जाएगा. सो यहां पर आप देख सकते हो कि काफी अजीब सी लैंग्वेज बनाई हुई है. ठीक है, सिमिलरली काफी इजीली पूछा जा सकता था कि उस बैंक का नाम क्या है कि जिसने बेसिकली जिसके लिए इसको लॉन्च किया गया है. सो यू कैन सी दैट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम. सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर. इट इज ऑप्शन बी, दैट इज HDFC बैंक. एंड आई कैन सी नेहा, दिव्या, भूपेश, कुमारी दीक्षा, अंजलि, सुहास, नेहा, एवरीबडी हैज गिवन मी द राइट आंसर. दैट इज ऑप्शन बी, HDFC बैंक. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इंडिया की पहली ई गवर्न
गवर्न स्टेट कौन सी बनी है, ये आपको मुझे बताना है। ऑप्शन है सिक्किम, असम, गोवा, केरला, तेलंगाना। तो गाइस इंडियाज फर्स्ट ई गवर्न स्टेट, व्हाट इज द name of that state which become India's first e-governed state? It is option D, that is Kerala. Okay, so Kerala ने अचीव किया डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्न स्टेट। सो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछता हूं, प्लीज मुझे बताइए उस स्टेट का नाम जो कि बनी है इंडिया की पहली स्टेट जिसने लॉन्च किया है राइट टू वॉक। राइट टू वॉक को अडॉप्ट करने वाली वो पहली इंडिया की स्टेट कौन सी है? प्लीज क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टेट व्हिच हैज लॉन्च द राइट टू वॉक। तो राइट टू वॉक की बात की जाए तो इट वाज बेसिकली पंजाब व्हिच हैज लॉन्च दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी। जब हम बात करते हैं इंडिया की वो पहली स्टेट व्हिच हैज लॉन्च द कूल रूफ पॉलिसी, कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाली इंडिया की पहली स्टेट कौन सी है? दैट इज तेलंगाना। ठीक है जी। सो आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जहां पर यूनियन गवर्नमेंट ने 6 स्टेट्स के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया गया है सो दैट दे कैन बिगिन द डिजिटल क्रॉप सर्वे। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे को लॉन्च करने के लिए 6 स्टेट्स के साथ एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। आपके सामने क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इट सेज विच इज नॉट वन ऑफ दीज 6 स्टेट्स, इन 6 स्टेट्स का पार्ट नहीं है, आपको मुझे बताना है उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम। सो हियर प्लीज गाइस टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टेट। सो लेट मी टेल यू, in order to answer this question you have to remember that what exactly these 6 states are. So let me tell you that these 6 states are Assam, Gujarat, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh. Now I think it will be easier for you to answer me the right answer. So absolutely right guys, it is option E, that is Andhra Pradesh, which is not a part of this particular part. ठीक है, तो आप ये देख सकते हो जो डिजिटल क्रॉप सर्वे इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एग्री स्टैग और आइडिया। आइडिया क्या है? इट इज इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर, जिसको कि डेवलप किया गया था 2020 में। ठीक है, सो गाइस आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एब्सोल्युटली राइट, ऑल द पीपल हैव गिवन मी द राइट आंसर। नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एनटीसीए ने रिसेंटली एक कॉन्स्टिट्यूट की है एक चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी सो दैट दे कैन ओवरसी द प्रोजेक्ट चीता। तो हम सभी जानते हैं कि कूनो नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पर चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया था और एनटीसीए ने कॉन्स्टिट्यूट की है एक चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। आपके सामने क्वेश्चन ये है कि कितने मेंबर्स उस कमेटी के अंदर हैं और मुझे ये भी बताइए चैट बॉक्स के अंदर दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द चेयरमैन फॉर दिस पर्टिकुलर कमेटी। तो जब हम बात करते हैं कि कितने मेंबर्स की कमेटी है, इट इज अ 11 मेंबर कमेटी एंड राजेश गोपाल इज बेसिकली हैज बीन चूजन एज द चेयरमैन ऑफ दिस 11 मेंबर Cheetah Project Steering Committee, which will be overseeing the project Cheetah. And I can see Chetna, Suhas, Bhubesh, Rekha, Surbhi, Shastri, everybody has given me the right answer to this question. Now let's move on to the next question, guys. Next question is on the Quad Leaders Summit. So guys, we all know that Quad Leaders Summit was recently held in Hiroshima, Japan. ठीक है, तो ये जो 3rd इन पर्सन क्वाड लीडर समिट थी ये हुई थी हिरोशिमा जापान के अंदर। आपके सामने क्वेश्चन है कि इसमें से वो कौन सा इनिशिएटिव है जिसको अनाउंस नहीं किया गया था। सी, हमेशा क्वेश्चन इस लाइन पर नहीं आएगा, डायरेक्ट लाइंस पर नहीं आएगा कि कौन सी चीज थी जो बेसिकली टच की गई थी। दे कैन ऑल्सो आस्क दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इट। सो यहां पर अगर हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर initiative की which was not announced at the Quad Leaders Summit, it is Strategic Defense Collaboration Initiative. So that means all these particular initiatives were part and they were being announced during this particular summit. और जिसको नहीं announce किया गया था that was Strategic Defense Collaboration Initiative. Absolutely right to the question number 10. It is option C which is the right answer. Next question is from the exercise. So that exercise which is in the news is Al-Mohat Al-Hindi 2023. So आपको इस क्वेश्चन में मुझे बताना है that what is the name of the country which has participated in this particular exercise. Let me tell you that it was a naval exercise. और जब भी कोई डिफेंस एक्सरसाइज आपके सामने न्यूज में होती है, you have to basically cover 2 important things. First one is कि participating countries कौन सी थी, second one is the venue of that particular exercise. So when I talk about the right answer, the country which participated along with India in this exercise, it was Saudi Arabia. Okay, so now let's guys move on to the next question which is on the loan agreement, and this loan agreement has been signed for the industrial corridor development in the Indian state of Andhra Pradesh, जिसके लिए एक loan agreement sign हुआ है between government of India and which one of the following organization। वो कौन सी organization है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये 141.2 मिलियन $US का लोन अग्रीमेंट साइन किया है फॉर द इंडस्ट्रियल कोर डेवलपमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर
organization with which this particular loan agreement has been signed is Asian Development Bank. तो जब हम बात करते हैं ADB की, तो ADB का हेडक्वार्टर क्या है, उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. हेडक्वार्टर की बात करें, इट इज इन मनीला, फिलीपींस. और जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो क्या है उनका नाम, दैट इज Masatsugu Asakawa. Okay, so guys, that's how you are really required to remember the exact important static details about these international organizations as well, because they are really very important to be covered from the exam point of view. Moving on to the next question. So guys, SBI ने recently launch की है अपनी EcoRap report and उसके अंदर उन्होंने बताया कंट्री की ग्रोथ रेट के बारे में. So the question is on the similar lines. You have to tell me कि for fiscal year 2023 what exactly is the India's growth rate. So इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है as per the SBI EcoRap report. We all know EcoRap report launch की जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा. And when I talk about the right answer to this question, it is 7.1%. That is the growth rate for India for the fiscal year 2023 as per the SBI EcoRap report. ठीक है. So question number 14 आप सभी के सामने है and you have to tell me that परमिंदर चोपड़ा जी को recently recommend किया गया है as the first woman CMD of which one of the following organizations. So guys, Public Enterprise Selection Board ने उनको choose किया है. Name of the person is परमिंदर चोपड़ा और आपको बताना है that she is the first woman CMD of which one of the following organizations. So what is the name of that organization? It is Power Finance Corporation. Similarly guys, let me tell you that recently Ravneet Kaur was appointed as the chairperson of CCI. CCI stands for Competition Commission of India. So that's how you are really required to remember details, and you can correlate one news with the another news in order to remember these different kind of information which are really important to be covered from the exam point of view. अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको मुझे बताना है उस कंपनी का नाम जिसको मिला है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 15,000 करोड़ BSNL कॉन्ट्रैक्ट फॉर द 4G डिप्लॉयमेंट. तो 4G के डिप्लॉयमेंट के लिए 15,000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस ऑर्गेनाइजेशन को. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन? The name of that organization is Tata Consultancy Services, which has basically backed this 15,000 crore BSNL contract. Okay, so ये जो consortium, it will also include Tejas Networks, C Dot and the ITI Limited, which has also won the bid for this BSNL's Pan India 4G project. But यहाँ पर who will be taking the major role? It will be TCS, that is Tata Consultancy Services. Okay, so I can see here in the comment section all the people have given me the right answer. So अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है. The question is on the joint malnutrition estimates and the question is on a very easier line. Once again the question is on a releasing body. ठीक है जी. तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम के अंदर भी आपको एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ मिलेगा, बट यू हैव टू ऑलवेज फोकस दैट व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन. यू कैन जस्ट सी दैट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एस्टिमेट व्हिच इज बीइंग रिलीज्ड बाय, एंड हियर द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर मेंशन्ड. सो यू हैव टू बी वेरी क्विक एंड सी दैट व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज डिमांडिंग. आपकी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपको आंसर में क्या बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर एक की फाइंडिंग दी गई है इस पर्टिकुलर एस्टिमेट की, और आपको बताना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसने कि इसको लॉन्च किया है. सो हियर गाइस द राइट आंसर इज दैट all these organizations have basically released this particular joint malnutrition estimates, that is option E, UNICEF, WHO and World Bank. तो जब हम बात करते हैं यूनिसेफ की, तो जब भी हम बात करते हैं ऐसे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्या उनके चीफ्स का नाम है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स. तो मैं अगर आपको बताऊं कि चीफ का नाम अगर हम बात करते हैं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं दैट इज कैथरीन रसल, जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुई थी. देन जब हम बात करते हैं WHO के डायरेक्टर जनरल की, दैट इज बेसिकली टेड्रोस अधनॉम. ठीक है, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, हमने रिसेंटली पढ़ा कि डेविड मेलपास को रिप्लेस किया है अजय बांगा जी ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. ठीक है, तो अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर दैट वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ एंड WHO. सो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन. नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द समर्थ कैंपेन. तो समर्थ कैंपेन को रिसेंटली लॉन्च किया गया था, एंड इसको बेसिकली लॉन्च किया गया ग्राम पंचायत लेवल. किस चीज को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली क्वेश्चन है. टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड एजुकेशन फॉर गर्ल्स. लेट मी टेल यू दैट समर्थ कैंपेन जो है गाइस, ये टारगेट करता है 50,000 ग्राम पंचायत को, एंड ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1 Feb 2023 एंड इट विल एंड ऑन 15 August 2023. जब हम बात करते हैं कि वो कौन सी चीज को प्रमोट करने वाला है, इट विल बी प्रमोटिंग द डिजिटल ट्रांजैक्शंस. दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. और ये बेसिकली फोकस करता है रूरल एरियाज
के अंदर रहने वाली वुमेन्स के ऊपर, ठीक है। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई कैन सी ऑल द पीपल हैव गिवन मी द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन the one of the scheme which has been recently launched, and what is the name of that scheme? That is AMDCF, which stands for Assistance for Dash Devices Cluster for Common Facilities. And I think it is really very easy for you to identify that. बेसिकली जब भी ऐसा कोई एक्रोनिम आएगा तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि AMDCF में व्हाट डज M स्टैंड्स फॉर। M बेसिकली क्या है? इट इज मेडिकल मर्चेंट मोबाइल मास्टर एंड माइक्रो। सो बेसिकली इट इज अ मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटीज। तो बेसिकली ये क्या करने वाला है? सो जब हम बात करते हैं गाइस इस पर्टिकुलर स्कीम की, ये जो स्कीम है एम करती है टू एस्टैब्लिश एंड स्ट्रेंथन द कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन द मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स, एंड इट एम्स टू फोर्टिफाई टेस्टिंग फैसिलिटीज फॉर द मेडिकल डिवाइसेस। कैसे किया जाएगा? बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दीज पर्टिकुलर क्लस्टर्स एंड दीज टेस्टिंग फैसिलिटीज, दीज टेस्टिंग लैब्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम बात करते हैं कि भाई ये कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि इसके पीछे है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, और इसको कौन देखने वाला है? दैट विल बी द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा चर्चित चीज थी इस बार इन द लास्ट 10 डेज, दैट वाज इंडियाज न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो गाइस रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है न्यू पार्लियामेंट हाउस को, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। कैन सीट हाउ मेनी मेंबर्स इन द लोकसभा चैम्बर। तो यहां पर एक पर्टिकुलर लिमिट है जो कि लोकसभा के लिए है और राज्यसभा के लिए है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द नंबर फॉर द लोकसभा चैम्बर। ओके, सो गाइस हम सभी जानते हैं ये जो नया पार्लियामेंट हाउस है रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी जी ने। और जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, सो व्हाट इज राइट आंसर? इट इज option C, that is 888. So 888 members will be in the Lok Sabha chamber and 300 people can sit in the Rajya Sabha chamber. Okay? तो एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि सिंगोल यहां पर काफी ज्यादा न्यूज के अंदर था जिसको स्टैब्लिश किया गया था, एंड that basically belongs to the Chola dynasty. That is another important thing that you have to remember. Moving on to the next question, guys, you have to tell me the name of the scheme, which is India's Central Sector Scheme, which is going to continue, which has been extended by the government for a period of 2 years. ठीक है, तो यहां पर रिसेंटली ये डिसीजन लिया गया था ड्यूरिंग बाय द नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमिटी, एंड यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर. So guys, quickly tell me what is the right answer to this question. Question number 20, you have to tell me the name of the scheme जिसको recently extend किया गया है till year 2025. So what is the name of that particular scheme? Let me give you a small example here, guys. So here I can see some people are saying that it is Atal Pension Yojana, some are saying Atal Bhujal Yojana. So guys, let me tell you, let me give you some hints here that this particular scheme is basically of the Ministry of जल शक्ति। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की स्कीम है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एलोकेशन की बात करते हैं स्कीम की तो इट वाज 6000 करोड़ रुपीस, जिसके जो कि बेसिकली 50-50 बेसिस पर है, जिसका जो एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन है 50% विल बी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 50% बाय द वर्ल्ड बैंक. सो नाउ लेट मी टेल यू दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ दैट स्कीम. एब्सोल्युटली राइट, ऑल द पीपल हैव गिवन मी द राइट आंसर. इट इज अटल भूजल योजना, अटल जल, और जल से आप याद कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द बैंक जो कि बना है बेस्ट बैंक विद इट्स नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉलिंग एज लो एज 0.25%. तो गाइज जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था लास्ट ईयर का, उसके अंदर इनके एनपीए जो थे वो सिर्फ 0.25% थे, एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम द बेस्ट बैंक with its net non-performing assets. So what is the name of that bank? It is Bank of Maharashtra, which is the right answer. Moving on to the next question. So अगला question है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर जो कि रिसेंटली लॉन्च की है गोल्डमैन सैक्स ने, और आपको मुझे बताना है what exactly the India GDP growth rate for the fiscal year 2023 as per the Goldman Sachs recently released data, and that is 6.3%. So आप देख सकते हो it was basically 6.3%. Okay. So I hope that this is clear to all of you guys. Let's move on to the next question. And here you have to tell me the name of the organization जिसने recently partnership किया with the government e-marketplace portal. And under this part, it is going to offer taxi services. तो ये taxi services provide करने वाले हैं to the government offices, agencies and PSUs. तो please मुझे बताइए उस organization का नाम जिसने की इसको
इस अग्रीमेंट को साइन किया है विद द जेम पोर्टल, दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस पोर्टल. सो क्वेश्चन नंबर 23, and I can see all the people are saying that it is Uber. Absolutely right, it is Uber which has partnered with the GEM portal to offer taxi services to the government offices and agencies. Moving on to the next question, guys, you have to tell me that which one of the following has recently won the Palme d'Or 76th Cannes Film Festival पे इसको ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है. बेसिकली इसको बनाया किसने था? जस्टिन ट्रायट ने. तो आपको मुझे बताना है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम ऑफ दैट. इट इज एयरविक एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, द ओल्ड ओक, the justice is done, and a better life. So what is the right answer to the question number 24? And I can see in the comment section, absolutely all the people are saying that it is option B, anatomy of a fall. That is absolutely right. So option B is the right answer to this particular question. So guys, I hope that this is clear to all of you. Now moving on to the next question. This question is from the important appointments. So recently Central Vigilance Commissioner कौन बने हैं ये आपको मुझे बताना है चैट बॉक्स के अंदर. लेट मी टेल यू दैट अर्लियर सुरेश एन पटेल वाज सर्विंग एज द कमिश्नर ऑफ सीवीसी, एंड उसके बाद एक्टिंग कमिश्नर बने थे हमारे कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव. अब आपको बताना है कि अभी किसको अपॉइंट किया गया है एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. So to the question number 25, I can see all the people are saying it is option C. Absolutely right. So this is the name, this is the person who has been appointed as a Central Vigilance Commissioner, and he is the Vice President, President and the Prime Minister of India. And here guys, what is the right answer? It is option C only, that is Praveen Kumar Srivastava, who was earlier serving as the acting chief of the Central Vigilance Commissioner. Okay, moving on to the next question, guys. We have already covered the 25 questions, and मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने स्कोर्स नोट कर रहे हैं एक अपने पास कॉपी पेन में कि what exactly your scores are. Okay, so guys, moving on to the next question. नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, और आपको बताना है कि बेसिकली वो कौन कौन सी जगह को कनेक्ट करने वाली है. Okay, so let me give you a small hint that it will be connecting the states, that is Assam and West Bengal. ठीक है, तो ये जो दो हमारे एक्सट्रीम स्टेशन है ये मैंने आपको बता दिए हैं. आप मुझे बताइए what exactly are those places. So basically it has started from Guwahati in Assam and it will be terminating at New Jalpaiguri in West Bengal. That is the right answer to this question. Moving on to the next question. The question is on the 18th quarterly periodic labor force survey by NSO, और इस बार इन्होंने बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया के अंदर वो बेसिकली डिक्लाइन हुई है. दैट इज अ रियली वेरी गुड न्यूज. बट आखिर ये जो क्वार्टर 4 था फिस्कल ईयर 2023 का, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कम हुई है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. दैट व्हाट एक्जैक्टली इज द न्यू नंबर फॉर दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया. So guys, what is the new number? It is 6.8%. So guys, that is basically all. That is basically for all the people. Now when I talk about the males, so males के लिए भी यहाँ पर ये unemployment rate कम हुआ है and it is new number is 6%. When I talk about the females, guys, for females it was 9.5% earlier and now it has reduced to 9.2%. Overall we talk about it is 6.8%, and for the males it was 6%, for the females it was 9.2%. So I can see here all the people have given me the right answer. Now moving on to the next question. The next question is on the turbo UPI. Basically this particular thing aims to deliver a 5 times faster payment experience. So guys, हमें जितना टाइम लगता है ना UPI के अंदर जब भी हम स्कैन करते हैं, तो उस टाइम पर हमारा जो पेमेंट टाइम है उसको 5 टाइम्स और ज्यादा तेज बनाने के लिए क्या लॉन्च किया है? Turbo UPI. Turbo, we all know that basically which increases the speed. Okay, so यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम जिसने इसको लॉन्च किया है. So guys, quickly tell me the name of that company, and absolutely right, it is Razorpay which has launched this, that is Turbo UPI. Moving on to the next question. So Equitas Small Finance Bank ने एक agreement sign किया है, and under which they are going to design and build a digital banking platform which aims to provide a secure experience to the customers. और आपके सामने क्वेश्चन क्या है? आपके सामने क्वेश्चन है, ये जो agreement है, we always tell you that whenever there is an agreement there is a name of the party. दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट हो सकता है. पहली चीज आपको ये करनी चाहिए, व्हाट आर द नेम ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द एम. तो एम को हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, दैट इट विल बी प्रोवाइडिंग अ सिक्योर एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स. एंड व्हाट इज द फर्स्ट डायमेंशन? दैट इज द नेम ऑफ द पार्टीज. तो पार्टी का नेम क्या है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक. सेकंड पार्टीज नेम इज IBM कंसल्टिंग. दैट इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो गाइज, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है IPEF के ऊपर, विच स्टैंड्स फॉर इंडिया
इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रोस्पेरिटी, और आपको बताना है कि ये जो एक ग्रुप है इसके अंदर कितने कंट्रीज हैं, कितने मेंबर्स हैं, whether it is 14, 18, 12, 22, 8. You have the options here. Please quickly tell me what is the right answer. Here the question is on IPEF. What is the number of members of this particular block? It is 14. So India is also a part of it. Okay guys, so I hope that this is clear to all of you. And why it was in the news? Because India और बाकी के जो 13 IPF members उन्होंने recently IPEF supply chain agreement को sign किया है. That is why it was in the news. Moving on to the next question. So guys, recently DPIIT, that is the Department of Promotion Industry and Internal Trade, इन्होंने एक डेटा रिलीज किया था according to which जो FDI है ना इंडिया के अंदर, it has basically declined. कितना डिक्लाइन हुई है? It has declined by 22% टू 46 बिलियन डॉलर्स. बट आपके सामने क्वेश्चन ये है कि बेसिकली जो डिक्लाइन हुआ है इसका जो मेजर जो इन्फ्लो से हमारे वो कहां पर थे, ठीक है, जहां पर ये गिरावट आई है. इट वाज इन द कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, both A and B and all A, B and C. So guys, this is one of the off the track questions. See, एग्जाम के अंदर मेजरली जो क्वेश्चन रहने वाला है इट विल बी ऑन दिस पर्टिकुलर लाइंस की कितना डिक्लाइन हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, व्हाट इज द न्यू नंबर. बट यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सरप्राइज करने के लिए था, तो मुझे बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर. सो सम पीपल आर सेइंग दैट बोथ A and B. एब्सोल्युटली right guys, it is both A and B is the right answer. That is computer, hardware and software and automobile industry. So both of them were basically dragged down, and that is why India's FDI declined by 22%. Moving on to the next question guys, you have to tell me the name of the person who has been re-elected as the external auditor of the WHO. तो WHO के external auditor यहाँ पर किसको appoint किया गया है? Let me tell you, he is presently serving as the Comptroller and Auditor General of India. तो इंडिया के Comptroller and Auditor General का नाम अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हैं. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? इट इज GC मुर्मू, दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू जी. ठीक है जी. सो दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस, एंड यू कैन सी हियर दैट दिस इज बेसिकली अ 4-year term from the 2019 to 2023 earlier, and now once again it has been for a 4-year term. I hope that this is clear to all of you. So guys, now let's move on to the next question. So अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, and you have to tell me the name of the bank जिसने एक नया लोगो लॉन्च किया है अपना, एंड उन्होंने इसके साथ साथ एक टैगलाइन भी लॉन्च की है. उस टैगलाइन का नाम क्या है? दैट इज लाइफ को बनाओ रिच. तो लाइफ को रिच बनाने वाली ये पर्टिकुलर कंपनी जिसने ये नई टैगलाइन लॉन्च की है और अपना नया लोगो लॉन्च किया है, क्या है उस बैंक का नाम? प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 33, एंड द नेम ऑफ दैट बैंक इज यस बैंक. तो यस बैंक इज द राइट आंसर. ओके गाइज, सो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि इट बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू टेक द पेमेंट्स इन ई-रूपी, और उन्होंने भी इसको यहां पर एग्जीक्यूट करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की थी? दैट पार्टनरशिप वाज मेड विद द यस बैंक. एब्सोल्युटली राइट. इट इज क्वेश्चन नंबर 33. राइट आंसर इज यस बैंक. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फ्रॉम द इंपॉर्टेंट डेज, एंड वेयर देयर इज इंपॉर्टेंट डे देयर आर 2 dimensions. फर्स्ट डायमेंशन इज द डेट ऑन विच दैट पर्टिकुलर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, एंड द नेक्स्ट थिंग इज द थीम, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑन द सेकंड डायमेंशन. तो यहां पर क्वेश्चन है ऑन द थीम ऑफ द 75th एनिवर्सरी ऑफ United Nations Peacekeeping International Day of UN Peacekeepers, and you have to tell me the theme. So guys, एक हलवा क्वेश्चन आप सभी के सामने. थीम काफी इजी है याद करना किसी भी चीज की. तो जब हम बात करते हैं यूएन पीस कीपिंग इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, इसकी जो थीम थी फॉर द 75th एनिवर्सरी ऑफ द डे, इट इज पीस begins with me. Okay, so guys, सबसे पहली शुरुआत होती है अपने आप से, and that is why the theme for this year is peace begins with me. और जब हम बात करते हैं कि ये डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो कैन एनीबडी टेल मी दैट? एंड आई कैन सी कुमारी दीक्षा सिंह 29th में. एब्सोल्युटली राइट. इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 29th मई. तो 29th मई को यहां पर यूएन पीस कीपिंग डे बेसिकली लॉन्च किया जाता है. इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स डे को हम सेलिब्रेट करते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आपको बताना है उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम जो कि बनी है इंडिया की पहली इंश्योरेंस कंपनी जिसने लॉन्च किया है एक प्लान फॉर द डायबिटिक्स. तो डायबिटिक्स के लिए प्लान लॉन्च करने वाली इंडिया की पहली इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है? द नेम ऑफ दैट कंपनी इज बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, विच हैज लॉन्च्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट.
Absolutely right. So here all the people have given me the right answer to the question number 35, option C. So I can see that most of the people are giving me the right answers. That means that really indicates कि आपकी जो preparation है वो एकदम सही track पर जा रही है, and you have to keep up the momentum till the exam comes. Okay guys, so keep up the momentum. Let's move on to the next question, and the next question you have to tell me the name of the organization जिसने roll out किया है India Country Partnership Strategy CPS 2023-2027, catalyze robust, climate resilient and inclusive growth. So guys, quickly tell me the name of the organization which has released this particular report. So what exactly is the title for this particular part? So guys, I can see here the right answer to the question is option B, that is Asian Development Bank. और ADB के जो 3 strategic objectives हैं under this particular strategy, what exactly these objectives are? These are to accelerate structural transformation and job creation, promote climate resilient green growth and deepen the social and economic inclusiveness. So guys, these are basically the important objectives of this particular strategy. I hope this is clear to you. Moving on to the next question. So guys, here please tell me the name of the company which has become the first manufacturer to get Confederation of Indian Industries Green Pro Eco Label. तो यहाँ पर Green Pro Eco Label को लॉन्च किया था CII ने, और आपको बताना है वो पहले मैन्युफैक्चरर का नाम जो बनी है, पहली मैन्युफैक्चरर to get this Green Pro Eco Label. What is the name of that organization? It is JSW Steel. Okay, so that is the right answer to this question. Absolutely right. Everybody has given me the right answer. Okay. So moving on to the next question guys, the next question is अश्विनी कुमार को recently appoint किया गया है as a MD and CEO, but कौन से बैंक के लिए appoint किया गया है? Quickly tell me the right answer to this question. तो काजली सिंह सर, ये एचपीएस के लिए भी यूजफुल है. सी हर एक न्यूज एचपीएस के लिए यूजफुल नहीं है यहाँ पर, बट मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स विच आर रिलेटेड टू द स्कीम्स, जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं हमारी, और जो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, all such kind of current affairs are useful for the HPS exam as well. Okay, so I hope your doubt is cleared, Kajal. Now when I talk about the right answer to this question, the right answer is UCO Bank, जिसके अश्विनी कुमार जी बने हैं नए MD and CEO, and he will be taking from the 1st of June 2023. So moving on to the next question guys, the question is on a very simpler line. See, you can see here that a current affair has been given to you and the question is on a very static line. It has been asked that what is the capital of Turkey. So guys, let me tell you why Turkey was in the news, because Recep Tayyip Erdogan, he has been re-elected as the president of Turkey. So आपको मुझे बताना है कि कैपिटल कौन सी है तुर्की की. So guys, जब हम बात करते हैं तुर्की की कैपिटल, इट इज अंकारा, और जब हम बात करते हैं करेंसी, तो करेंसी की जब हम बात करते हैं, इट इज टर्किश लीरा, विच इज द करेंसी ऑफ तुर्की. एब्सोल्युटली राइट, and this is the right answer to this question. Let's move on to the next question guys. So guys, ये काफी easy questions हैं, and I can really believe कि आप सभी इनके questions को बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं in the chat box. So guys, बढ़ते हैं अपने अगली question की तरफ. So अगला question आप सभी के सामने है, and this is basically on the Inter-Ministerial Committee for Facilitation of वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर. ठीक है, तो गैस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एक पायलट प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च करने वाली है, बट कितने सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए, ये आपको मुझे बताना है. सी, डिफरेंट स्टेट्स के कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको यहां सेलेक्ट किया गया है, एंड यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ दीज सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स अंडर दिस पर्टिकुलर पायलट प्रोजेक्ट which will be run by the Ministry of Cooperation. So guys, what is the number of those districts? It is basically, it will be launched in the 10 districts. So guys, I hope that this is clear to all of you. So now let's move on to the next question, and the next question is on the new CEO of Tata Consultancy Services. तो हमने पढ़ा था पीछे की TCS को BSNL के 4G डिप्लॉयमेंट के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सीईओ को भी अपॉइंट किया गया है, और नए सीईओ कौन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के? दैट इज के कृतिवासन. एब्सोल्युटली राइट, के कृतिवासन इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 41. एब्सोल्युटली राइट. सो दिव्य सिंह सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे क्या आरबीआई में? सिंपल सिंपल. सी, you have covered this, that is why they seem simple to all of you. And see guys, this particular session comprises of a mixture of questions. तो अलग अलग तरीके के questions हैं, और कैसे भी question exam में आ सकते हैं एग्जाम के अंदर. So you have to be ready for every kind of question. Okay, moving on to the next question. अगला question आप सभी के सामने है. The question is once again on a very simple lines. Basically it is on the chairman of ISRO.
सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसरो ने रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च किया था नेविगेशन सैटेलाइट लाइक NVS-01 विच ऑनबोर्डेड द रॉकेट GSLV F12। और कहां से इसको लॉन्च किया था? इट वाज लॉन्च फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। और आपके सामने क्वेश्चन है कि चेयरमैन कौन है इसरो के। सो गाइज लेट मी टेल यू that in the previous year questions as well we have seen that such kind of questions are being always related from the करंट अफेयर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल उस टाइम पर हम बात करते हैं 2021 का जो आरबीआई का एग्जाम था, वहां पर एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग द अमेजॉन, जब एक काफी चीज चर्चित थी दैट इज एंडी जैसे विल बी रिप्लेसिंग जेफ बेजोस एज द सीईओ ऑफ अमेजॉन। बट क्वेश्चन क्या आया था कि अमेजॉन ड्यूरिंग इट्स अर्लियर डेज वो कौन सा स्टोर था। ठीक है, तो इसलिए आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है जब हम बात करते हैं चेयरमैन ऑफ इसरो की। सो राइट आंसर इज एस सोमनाथ, दैट इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है दैट they will be setting up its Indian regional office in the Indian gift city. So guys, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के अंदर ये इसको सेटअप करने वाले हैं और आपको मुझे बताना है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो कि अपना रीजनल ऑफिस यहाँ पर लॉन्च करेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते थे एंड द particular organization is New Development Bank which has basically announced this particular thing. Moving on to the next question, guys. So next question, NTR A Political Biography. This is a book. So what you have to tell me? You have to tell me the author of this book. This question is from the books and authors. तो यहाँ पर दो ही चीजें याद करनी है. First one is the name of the book and the next thing is the author who has written this particular book. So when I talk about the author of this particular book, it is Ramchandra Murthy, which is the right answer. That is option C, Ramchandra Murthy, who has written the book NTR A Political Biography, and that is the right answer. Moving on to the next question, guys. So you have to tell me the name of the country जिसने जीता है NSC कावा वुमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप जो कि रिसेंटली हुआ था काठमांडू के अंदर. तो वो कौन सी टीम है जिसने कि इस पर्टिकुलर इवेंट को जीता है, इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप को जीता है? So let me tell you, you will be proud to hear that India has basically made us proud as Indian women's team has won this particular cup which was held in Kathmandu, and that is the right answer to this question. Moving on to the next question. So guys, Maharashtra ने recently अपना एक oral campaign, एक oral hygiene campaign को launch किया है और question काफी simple line पर है that उसके smile ambassador कौन बने हैं. तो who has become the smile ambassador of the oral hygiene campaign in Maharashtra? You have to just tell me the name of this particular person who has been appointed as chosen as the smile ambassador, and he is none other than Sachin Tendulkar, the Indian legend. Moving on to the next question, guys. Next question is once again for all the cricket lovers. So we all know कि recently IPL 2023 championship conclude हुई है, and you have to tell me the name of the team which has won this particular title for this year. So guys, we all know the name of this particular team which has won the IPL 2023 is, so Gujarat Titans was defeated by Chennai Super Kings to win the IPL 2023, and that is option D is right answer to the question number 47, that is Chennai Super Kings. So CSK has basically lifted this particular trophy for the 5th time in the IPL history, and I hope that that is absolutely clear to all of you. Now guys, let's move on to the next question, and here you have to tell me the name of the India's first polarimetry mission. तो इंडिया का पहला polarimetry mission आपको बताना है कि उसका नाम क्या है. ऑप्शंस आपके सामने गिवन है. So here guys, please quickly tell me what is the right answer. इंडिया का पहला polarimetry mission which stands for X-ray polarimeter satellite and its name is XPOSat. That is the right answer to this particular question. So guys, I am seeing here that बहुत सारे लोग CSK के फाइनल मैच याद कर रहे हैं. Guys, let's focus on this particular session. So question number 48, what is the right answer to this question? India's first polarimetry mission, it is option A, that is XPOSat. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसने पार्टनरशिप की है इंडिगो के साथ एज इट्स ऑथराइज्ड पेमेंट पार्टनर. तो इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिगो की ऑथराइज्ड पेमेंट पार्टनर बनी है? इज इट पेटीएम, पेजैप, Amazon Pay, Razor Pay and Just Pay? So guys, it is basically option E, that is Just Pay is the right answer. So guys, now we are moving on to the last question of our today's session. I want all of you to tell me the right answer in the comment section, and the last question is
here on your screen. So please quickly tell me कि कौन से आंसर को लॉक किया जाए. So here you have to tell me the name of the small finance bank जिसने पार्टनरशिप की है IBM कंसल्टिंग के साथ to design and build a digital banking platform in, and as a part of this they will be providing a secure experience to the customers. So guys, quickly tell me what is the right answer to this question. Let me tell you that we have already covered this question in the today's session. हम इस question को already cover कर चुके हैं, but उस question के अंदर question एक different line पर था और इस question के अंदर question एक different line पर है. ठीक है जी, तो वहां पर आंसर था IBM कंसल्टिंग और यहां पर आपको याद रखना होगा. That's why I always tell you that in whenever an agreement is there, you have to just remember the name of the parties. तो क्या है दूसरी पार्टी का नाम जो कि पिछली बार क्वेश्चन में मेंशन थी? It was Equitas Small Finance Bank. Absolutely right. It is option C, Equitas Small Finance Bank. That is the right answer to this question. So guys, now you have to tell me that what exactly your scores are out of 50 in this particular session. मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर. और जो बच्चे इस सेशन को as a recorded form देख रहे हैं on the YouTube channel, kindly tell me that what exactly your score is out of 50. See guys, it is really very important to analyze your scores. तो स्कोर से आप एनालाइज कर पाएंगे कि आखिर आपका स्कोर कितना था, आपकी वीक एरियाज क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं. तो अपने वीक एरियाज को कन्वर्ट करना है स्ट्रॉन्ग एरियाज के अंदर, एंड दैट्स हाउ यू विल बी acing in the exam. Okay, so I hope that this is clear to all of you. I can see here some of the people are telling me their scores. So guys, if you have also still not subscribed to our YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos we provide. And guys, you guys are really aware about it that we always come up with such kind of interesting videos and sessions that really helps you for your exam preparation. और अगर आप आज के सेशन की पीपीटी चाहते हैं, उसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो ज्वाइन करना ना भूलिए हमारा टेलीग्राम चैनल. एंड गाइस, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस सेशन और आपका कोई भी फीडबैक है और आपको ये सेशन कैसा लगा, आप हमें बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं at hello@edutap.co.in. So guys, what exactly is the email for this? It is hello@edutap.co.in, and you can also call us at 8146207241. So guys, now please quickly tell me if you are having any queries, and otherwise we can conclude this particular session. So यहाँ पर I can see the way you are is saying, sir, scheme tap is enough or not? So please note it down that scheme tap is absolutely enough for the exam. You do not have to refer to any other source for completing the schemes, because schemes tab is a really comprehensive document in which we are providing you all the schemes which were in news in a particular month. Okay, so I hope that I have already answered your query successfully. Okay, so you can just type a yes in the chat box so that we can see that yes, you are satisfied with the answer. See, once again let me tell you that schemes tab is a very comprehensive document. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना शुरू कीजिए, काफी important document है, because schemes has really a very high weightage when we talk about these regulatory bodies exams. So Ayush is saying, sir, what topics are important for the phase 2? See Ayush, जो हमारे आरबीआई की नोटिफिकेशन है वहां पर एक पर्टिकुलर आप देख सकते हो कि सिलेबस प्रोवाइडेड है. तो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स मेंशन्ड है, किसी भी टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है. तो आप टॉपिक बाय टॉपिक अपने सिलेबस को कवर कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस बार काफी सारे चेंजेस हुए हैं. सो नोबडी कैन प्रेडिक्ट दैट यस दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस. व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट glance through the PYQs को देखिए प्रीवियस ईयर के, एंड सी दैट जो वो टॉपिक्स पहले होते थे हमारे सिलेबस के अंदर क्या वो अभी भी हैं, उनको जल्दी से जल्दी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. एंड लेट मी टेल यू, इट विल बी रियली बेनिफिशियल अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस को कवर करते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक एग्जाम डे पे इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. So guys, if you are having any other queries, feel free to ask in the chat box, and otherwise we can conclude this particular session. So I can see here there are no more queries in the comment section. So guys, it was really good to have all of you for joining this particular session, and I really believe कि आप सभी ने session को enjoy किया होगा. Now we will be meeting the next week with another top 50 MCQ session for the month of June, and I really believe that you must have liked this particular session and do join that particular session as well. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.